क्या हाल भाई साद। एक काम से। बढ़िया भाई। आपने वो फॉर्मूलाज देखे क्या एन्युइटीज के, हाउ टाइम वैल्यू ऑफ मनी वर्क्स? आपने कहा था नेक्स्ट वीक के लिए ड्यू है। फ्राइडे बोला था भाई। चलो ठीक है, कोई नहीं। सो आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग हाउ अनवाइंडिंग वर्क्स। उसके लिए आपको वो शेड्यूल में एक बार दिखाता हूँ। बट हाउ द प्रेजेंट वैल्यूज आर कैलकुलेटेड, दैट इज द पार्ट ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको वो देखने पड़ेंगे फॉर्मूलाज। मैं आपको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। देन वी आर गोइंग टू कवर आपका एसेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन का एक कॉन्सेप्ट है। एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द कंटिंजेंट लायबिलिटी पार्ट। सो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। एक बेस एग्जांपल है। नाउ दिस इज जस्ट हाउ अ रूटीन अमोर्टाइजेशन विल वर्क, और आप यही शेड्यूल बनाओगे इन फार फोर whatever topics we are going to do, whether it is going to be your bonds, whether it's lease or even asset retirement obligation, जो आज हम लोग कवर करेंगे। So what happens, what is the amortization schedule? So this schedule actually breaks out कि आपका obligation क्या है, which means either your asset और liability का balance क्या है, उसके सामने आपको कितना पेमेंट मिल रहा है या आप कितना पेमेंट कर रहे हो, वो पेमेंट में कितना पोर्शन टूवर्ड्स प्रिंसिपल अप्लाई होता है, कितना पोर्शन टूवर्ड्स इंटरेस्ट अप्लाई होता है, एंड इवेंचुअली द क्लोजिंग बैलेंस वंस द टर्म इज ओवर वो जीरो होना चाहिए। So hypothetically, let's say you went to a store and you purchased a car for $200,000. तो आपका beginning balance हो गया $200,000 as a liability. So this is the format which we typically follow: beginning balance, then what is the interest, what is the principal, what is the payment, and what is the ending balance. So 200,000 is your beginning balance. Now you are paying a monthly EMI of $1,199. अब ये जो आप ईएमआई पे करते हो 1199, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। वन विच इज समथिंग गोइंग टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एंड वन विच इज समथिंग गोइंग टूवर्ड्स द इंटरेस्ट कंपोनेंट। तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। नाउ इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई योर 1199 अमाउंट कैसे निकला, ये आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर आपको बताएगा। हाउ अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटीज आर गेटिंग कैलकुलेटेड, नॉट अ स्कोप ऑफ योर एफआर। So we are not covering this, but आपको बेस पता होना चाहिए, and that is where your present value formulas will help you. अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है? सो इंटरेस्ट इट मींस ऑलवेज योर ओपनिंग बैलेंस विच इज योर लोन आउटस्टैंडिंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स। सो इन दिस एग्जांपल आपका ओपनिंग बैलेंस है $2 लाख का। यू आर बीइंग चार्ज 6% इंटरेस्ट पर एनम। नाउ यू आर मेकिंग अ मंथली पेमेंट, इट मींस इंटरेस्ट विल बी एप्लीकेबल फॉर 1/12 पीरियड। सो आपने जो फर्स्ट पेमेंट किया 1199 का, उसमें से $1,000 वेंट टुवर्ड्स योर interest. So what is the balance amount? $199.10. This has gone towards your principal. Principal means your loan has reduced by $199.10. So what is your ending balance of the loan now? Your beginning balance was $2 lakh minus 199.10. Loan amount has reduced from the principal basis. So your now closing balance for month one becomes $199,800. Now closing balance of first month becomes the opening balance of the second month. Similar Loan treatment. amount of principal basis. So do we have to give principal or what do you mean? सो आप बताओ कि आपका लोन कैसे खत्म होता है? व्हेन यू रीपे, प्रिंसिपल पोर्शन से खत्म होता है कि इंटरेस्ट पोर्शन से खत्म होता है? Principal. तो वो हमने वही किया। 2 लाख आपका ओपनिंग प्रिंसिपल था, उसमें से आपने $199.10 रीपे किया प्रिंसिपल फर्स्ट मंथ में। सो व्हाट इज योर लोन आउटस्टैंडिंग नाउ? 199,800। How do we decide the 199 amount? स्टेप वन में क्या किया हमने, अब रिपीट करो। Interest calculate. आपका ईएमआई है 1199, तो आपकी पॉकेट से पे चेक कितना गया 1199 का। दिस इज द टोटल अमाउंट विच हैज पेड एज अ ईएमआई इंस्टॉलमेंट। अब इसके दो पार्ट होते हैं, समथिंग गोइंग टुवर्ड्स द इंटरेस्ट एक्सपेंस, समथिंग इज गोइंग टुवर्ड्स द कैपिटल रीपेमेंट्स। तो पहले हमेशा इंटरेस्ट को प्रायोरिटी मिलती है। सो इंटरेस्ट एक्सपेंस इज कैलकुलेटेड विच इज योर बिगिनिंग लोन ऑफ $2 lakh into 6% interest per annum. This is a monthly schedule, so into 1/12. तो आपने जो 1199 का टोटल पेमेंट किया, उसके दो पार्ट गिरे। सबसे पहला $1,000 वेंट टुवर्ड्स द इंटरेस्ट कंपोनेंट, एंड नाउ व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट? 1199 minus $1,000, so 199 is a principal component.
सो 199 आपने रीपे किया एज अ कैपिटल रीपेमेंट ऑफ योर लोन, एंड $1000 आपने सिर्फ इंटरेस्ट पे किया बिकॉज ऑफ द ड्यूरेशन यू टेक द लोन. So now what is your closing balance, which is 2 lakh opening balance minus 199.10. क्लियर है? Okay. सो अब सेकेंड मंथ का आप कैलकुलेट करो. लेट मी नो हाउ interest will work, what is the principal component, interest component, and closing balance of the loan. Why is the interest changing and not the same? इंटरेस्ट किस पे लगता है? Total value, principal, टोटल total principal. प्रिंसिपल. प्रिंसिपल आपका चेंज हो रहा है क्या, सेम रह रहा है? In the example we did yesterday, weren't we calculating the same monthly interest amount for each quarter? कौन से एग्जांपल में? बुक में हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी उसमें. नो, तो भाई दो चीजें. मैं अभी हम लोग सिंपल एक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, हाउ टू प्रिपेयर द शेड्यूल. अभी ना हम आपके बुक में है ना कोई चैप्टर में है. वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि ये शेड्यूल अगर फ्यूचर में बनाने को आएगा लीज में, बॉन्ड्स में, या असेट रिटायरमेंट प्लानिंग में, तो शेड्यूल कैसे बनेगा. यहाँ पर कहाँ लिखा है, आप अगर फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट पे कर रहे हो, प्रिंसिपल पे कर रहे हो, तो प्रिंसिपल कांस्टेंट कैसे रह सकता है? वो तो रिड्यूस हुआ, प्रिंसिपल तो फिक्स रेट अमाउंट. नहीं, I'm कैन यू डिटेल में बताओ, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट. the the interest remains the same throughout. That's कहाँ लिखा है ऐसा, इंटरेस्ट रिमेन्स द सेम? unless आपकी un- if it's simple interest like the interest till now what we have done, we are taking the same interest expense. इंटरेस्ट एक्सपेंस सेम रह रहा है, उसका मतलब आपका प्रिंसिपल रिड्यूस नहीं हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल यू टेक अ कार लोन. आप सिर्फ ईएमआई पे कर रहे हो, ईएमआई पे कर रहे हो. अगर आपका प्रिंसिपल ही रिड्यूस नहीं हो रहा है तो आप पूरी लाइफ ईएमआई पे करोगे क्या? आपको अल्टीमेटली प्रिंसिपल तो रिड्यूस करना पड़ेगा ना ऑन अ मंथली पेमेंट. इंटरेस्ट तभी कांस्टेंट रह सकता है व्हेन देयर इज अ वन शॉट रीपेमेंट प्लान इज अवेलेबल. सपोज आपने कार लोन लिया $5 लाख का टुडे, रीपेमेंट वन शॉट आफ्टर द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर, तो आपका इंटरेस्ट सेम रहेगा बिकॉज यू आर नॉट रीपेइंग एनी प्रिंसिपल इंटरमीडियरी. अब एग्जांपल दिखाओ कौन सा बात कर रहे हो. एक तो आप है ना चीजों मिक्स मत करो यार, the concepts are different. शो में दी एग्जांपल. Example, the example that we had for trades notes payable that we discussed last class. दिखाओ एक बार, शेयर करो. बुक आपके हाँ, बुक खोलनी होगी, वो बेकर खोलना होगा आपकी बुक में. आपके पास है ना बैकर, आप ओपन करो. ट्रेड पेबल्स में हमने कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं किया है जहां पर हम लॉन्ग टर्म पेबल्स की बात कर रहे हैं. दिखाओ इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट कर रहे थे. दिखाओ एक बार, फिर पता लगेगा. देन आई कैन डिफरेंशिएट कि आप जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो वो यहाँ से कैसे डिफरेंट है. हम्म. So to purchase the supplies, the Dogs and Cat LLC borrowed a $50,000 from the Credit Hall Bank on 1st March, signing a 12-month 5% note. Interest payments are due quarterly. ठीक है, तो इसमें कहाँ पर ऐसा है कि आप इंटरेस्ट कांस्टेंट रख रहे हो, प्रिंसिपल चेंज नहीं हो रहा है?
50,000 to 5% to 3 by 12. That's the amount being taken through all the months. We're not changing the 50,000. दिखाओ मेरे को सेकंड क्वार्टर का इंटरेस्ट। आप क्वार्टरली पेमेंट कर रहे हो, रीपेमेंट कब हो रहा है? व्हेन द प्रिंसिपल इज बीइंग रीपेड। Next year. तो फिर प्रिंसिपल कांस्टेंट है कि नहीं है? इज प्रिंसिपल कांस्टेंट हियर और नॉट? I don't know. क्वेश्चन पढ़ के बताओ। आई डोंट नो ये क्या आंसर होगा? क्वेश्चन में लिखा हुआ, इंटरप्रेट तो करो क्वेश्चन को। It says borrows 50,000 just like you said borrows 200,000, so I'm not understanding the difference. 200,000 कहाँ पर आया? The 200,000, the example we're currently doing, सबसे I'm पहली trying बात, to understand the difference. चीजों को मिक्स मत करो। एक एग्जाम्पल पे बात कर रहे हो तो उसी एग्जाम्पल के कॉन्सेप्ट्स पे बात करो। डोंट कंपेयर टू थिंग्स बिकॉज वी आर नॉट डूइंग अ रिपीटेटिव एग्जाम्पल्स। हर एक एग्जाम्पल यूनिक है। अगर ये एग्जाम्पल पे बात कर रहे हो तो इसी पे बात करते हैं। रीड द क्वेश्चन एंड इंटरप्रेट लाइन बाय लाइन कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चालू करो रीड करना। We borrowed 50,000, signed a 12-month 5% note, interest payments are due quarterly. हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या कोई प्रिंसिपल रीपेमेंट की बात हुई है यहाँ पर? Are is this line talking about any interest repayment or a principal repayment or a both? When do we pay, pay the principal? मैं तो आपको वही पूछ रहा हूँ, आपको ये लाइन में कुछ मिला कि आप प्रिंसिपल कब पे कर रहे हो? इफ इट इज साइलेंट देन इट मींस आप एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल रिपे नहीं कर रहे हो। यू आर ओनली पेइंग द इंटरेस्ट कंपोनेंट। यू आर नॉट पेइंग एनी प्रिंसिपल बैक टू द बैंक राइट नाउ। कहीं पे लिखा है कि आप प्रिंसिपल रिपे कर रहे हो यहाँ पे? No. चलो एक्सेल ओपन करो, प्रिपेयर द अमोर्टाइजेशन शेड्यूल फॉर दिस। फॉर्मेट बनाओ, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, क्लोजिंग बैलेंस, एंड देन लेट्स गो टू आवर एग्जांपल। बाद में आपका गूगल शीट ओपन करो। आई कैन नॉट सी योर स्क्रीन। शेड्यूल पहले, फॉर्मेट पहले उठाओ। तो योर पीरियड, बिगिनिंग बैलेंस, पेमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, एंडिंग बैलेंस, सारे हेडर्स उठा लो। चलिए, बिगिनिंग बैलेंस आपका 50,000 है। हाउ इंटरेस्ट, फॉर्मूला लगा के इंटरेस्ट कैलकुलेट करो।
So are you reducing? What is the formula for principal first? Priority आप गिनते हो पहले interest. Second, you check what is the payment minus interest, that is a principal component. So what is the principal repayment you done? uh, कितना आपने principal repay किया? कुछ नहीं किया. So put it zero. So what is your ending balance of the loan at the end of the first payment? Beginning principal minus principal repaid, which is zero. Q payment is this payment towards principal? How can you reduce 625? कहाँ पर हमने ये देखा कि आपको 625 हटाना है? ऊपर फॉर्मूलाज लिखो एंड मे बी यू कैन ट्राई टू रिमेम्बर दिस. बिगिनिंग बैलेंस के ऊपर लिखो सेल नंबर B2 में, दिस इज द एंडिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस पीरियड. पेमेंट के ऊपर लिखो दिस इज द पेमेंट गिवन इन द क्वेश्चन. फिर थर्ड पे लिखो इंटरेस्ट, दिस इज पेमेंट माइनस इंटरेस्ट कंपोनेंट. इंटरेस्ट के ऊपर लिखो दिस इज बिगिनिंग बैलेंस इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू पीरियड एडजस्टमेंट. Into rate of interest into period adjustment. If monthly 1/12, quarterly 3/12, annually then 1/1. Rate of interest into period adjustment. Ending balance के ऊपर लिखो this is beginning balance minus principal. ठीक है, अब एक बार आप पूरा चार और पेमेंट का शेड्यूल बनाओ. पेमेंट 1, पेमेंट 2, पेमेंट 3, पेमेंट 4, एंड देन व्हाट इज द इंटरेस्ट एंड व्हाट इज द एंडिंग बैलेंस एंड ऑल. जहां समझ नहीं आता है ऊपर का फॉर्मूला रेफर करो कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है. 5 कैसे होंगे? साल में 4 ही क्वार्टर होता है ना. 12 months पूरा वो आपने चार चार पेमेंट्स करी हैं. हाँ, तो 5 करोगे तो 15 महीने का हो जाएगा. तो now go back to your solution, check whether interest entry is same or not for quarter and quarter. The solution is for the they record in the journal entries and for the matching principle. Sorry, It's not journal entry for the matching principle. They're not calculating the total interest for each quarter. They चलेगा. already अब आप एक काम करो, फॉर्मेट उठाओ सेम, नया टैब ओपन करो और हमारा एग्जांपल आप खुद बनाओ. ओ कैल कॉपी द एंटायर फॉर्मेट टू अ न्यू शीट. सो रो नंबर 2 और 3 को कॉपी करो, नई शीट में ले जाओ. और अमोर्टाइजेशन शेड्यूल वाली टैब पे आओ, इंफॉर्मेशन उठाओ क्या क्या दी है. So pick loan amount, annual interest, loan tenure, payment terms and monthly payment आप कितना कर रहे हो. Now this is a monthly payment, means it's a EMI. EMI is always inclusive of principal plus interest component. So based on this आपका tenure है 30 years, monthly payment है मतलब 360 payments you are doing, 12 payments in a year, 30 years में 360 payment. Now आप आपके अब इस शीट में आने के 360 payment 12 into 30. you are making a monthly repayments, right? So एक साल में 12 repayment, 30 years में 360 repayments.
सोल्यूशन मत देखो, आ जाओ शीट नंबर 50 में, आपके हिसाब से बनाना शुरू करो। सो फर्स्ट प्रेफरेंस कैसे गिनोगे? इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? क्या कर रहे हो ये? अच्छा 360, ओके। ऐसे 360 तक लिखने की जरूरत नहीं है। डू अ फॉर्मूला इज इक्वल टू प्रीवियस रो प्लस वन। हाँ ठीक है, ड्रैग कर लो। चलो सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, कितना इंटरेस्ट लगेगा। सो आपने जो पेमेंट किया 1199 का, उसमें से 1000 तो इंटरेस्ट के लिए था। सो हाउ मच वॉज फॉर अ प्रिंसिपल? 199.1। सो व्हाट इज योर एंडिंग बैलेंस? अमेजिंग। फॉर्मूला पढ़ो ऊपर का पहले, क्या लिखा है। और आपने क्या अप्लाई किया? ठीक है, नाउ एंडिंग बैलेंस ऑफ ईयर वन बिकम्स द बिगिनिंग बैलेंस ऑफ योर ईयर टू। और आपका आंसर सही है कि नहीं आपको कैसे पता लगेगा? द एंडिंग बैलेंस ऑफ द लास्ट पीरियड हैज टू बी जीरो। अगर वो जीरो नहीं हो रहा है, इट मीन समथिंग रॉन्ग हैज टेकन प्लेस। The payment is constant 1199.1, that is why it is EMI. EMI always remains the constant. अब फॉर्मूला ट्रैक करो प्रिंसिपल इंटरेस्ट एंडिंग बैलेंस का। रो नंबर 2 को पूरा कॉपी करो, बी से एफ तक, और लास्ट रो तक पेस्ट कर दो। सुनो सुनो मेरी बात सुनो। रो नंबर B5 से लेके F5 को कॉपी करो। B5 से F5, कंट्रोल C। अब आप जाओ 360 नंबर की रो पे। ऐसे नहीं जाओ आप, लेफ्ट एरो करो, एक लेफ्ट एरो करो। सुनो सुनो, मैं आपको, हाँ कंट्रोल डाउन एरो। हाँ अब आप बी से एफ को पूरा सिलेक्ट करो, विच इज योर कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। अब ऊपर कंट्रोल शिफ्ट अप एरो करो। हाँ एक एक डाउन एरो दबाओ एक बार। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एक बार दबाओ। पहले कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, अब कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करो एक बार। बस Done. कंट्रोल वी करो, कंट्रोल वी कर दो सीधा।
ठीक है, अब आप नंबर्स फॉर्मेट चेंज कर दो, बी से एफ सिलेक्टेड है, ऊपर जाओ, 1 2 3 लिखा है, वहां नंबर में डेसिमल्स हटा दो, नंबर सिलेक्ट करो, नंबर नंबर सिलेक्ट करो। अब देखो उसके बाजू में एक डाउन, हाँ लेफ्ट है, डू दैट, रिमूव द डेसिमल्स। ठीक है, चेक वेदर योर एंडिंग बैलेंस इज गेटिंग जीरो और नॉट। इफ यस देन योर आंसर इज राइट, इफ नो देन आपका शेड्यूल गलत है। ठीक है, इट्स $1, इट्स अ राउंडिंग ऑफ डिफरेंस। ठीक है, नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिपेयर दिस शेड्यूल। Yes. चलिए, अब ये आपका बेस है, बिकॉज यही आपको हेल्प करेगा इंटरेस्ट की एंट्रीज कैलकुलेट करने के लिए, प्रिंसिपल रीपेमेंट की एंट्रीज कैलकुलेट करने के लिए, एंड मैनी मोर थिंग्स व्हेन वी गो टू अ बॉन्ड्स एंड लीज चैप्टर। अब वापस आ जाते हैं, एक बार आप स्क्रीन हटाओ। सो कपल ऑफ स्मॉल कॉन्सेप्ट्स थे प्रीवियस चैप्टर के, आपके पास बुक में प्रैक्टिकल नहीं है, बट स्टिल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दोस कॉन्सेप्ट ये शेड्यूल समझना बहुत जरूरी था। So there is a one concept which is called a liability recognition exit cost. So let's understand what is this all about. सबसे पहले liability का official definition क्या होता है? So liability means there is a present obligation as a result of a past event, settlement of it which requires a future economic benefit outflows. मतलब definition को break करते हैं, there is a present obligation, it means there is a obligation on the company as a liability side as a result of past event. So you have done something in the past because of which the liability is created, the settlement of which requires a future economic outflow. उसको लायबिलिटी को सेटल करने के लिए आपको फ्यूचर में कैश या अदर इकोनॉमिक वे से रीपेमेंट करना पड़ेगा। Let's take an example. You have take a professional fees. So that's the past event because of which a liability has arisen to pay your chartered accountant. Or let's say you have a payroll services for the December period, you are going to pay the employees in January, so you have taken a services in the month of December, which is a event or a result because of which liability has arisen. So when a liability should be recognized, there is a present obligation as a result of past event, and settlement of which requires the future economic outflow. तो एक बार सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर अ लायबिलिटी रिकग्निशन। वी हैव अ नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीटली ऑन दिस कॉन्सेप्ट, सो बहुत सारी डिटेल्स वहां पर दी है, व्हाट इज द लायबिलिटी, व्हाट इज द कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड एवरीथिंग। बट लेट्स गो थ्रू दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ जो दिया हुआ है। सो एन एंटिटीज कमिटमेंट टू एग्जिट और डिस्पोजल प्लान बाय इटसेल्फ इज नॉट इनफ टू रिजल्ट इन अ लायबिलिटी रिकग्निशन। A liability which is associated with an exit or a disposal activity should be recognized only when this criteria are met. अब ये क्राइटेरिया कहाँ से आ रहे हैं? फ्रॉम द What's ओरिजिनल। an excess and disposal activity? आते हैं उस पर, ठीक है। अभी हम जनरल लायबिलिटी का डेफिनेशन समझ रहे हैं, उसके बाद हम एग्जिट पे आते हैं। सो ये पैरामीटर्स कहाँ से आ रहे हैं? द पैरामीटर्स आर कमिंग फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज लायबिलिटी। सो लायबिलिटी मीन्स देयर इज अ ऑब्लिगेशन राइट नाउ as a result of the events, a past event. In order to settle this liability, there is a present obligation to transfer the asset or other economic outflows. एक मिनट मैं होल्ड करना।
Okay, so let's go through the definition again. There is present obligation as a result of the past event. To settle, there is an economic outflow required. So this is the base definition of what is the meaning of exit disposal plan or a asset retirement obligation, which we are covering in this particular topic. So for example, हमने एक discontinuing operation करके topic देखा था back in our initial days. So we understand a discontinuing operation is a part of an organization which they have either decided to dispose of. A plan is approved by the management, and then you prepare a financial statements which has a one continuing operation and one as a discontinuing operation. So if there is a discontinuing operation, then merely you say there is a disposal activity or exit activity going on is not sufficient. Along with those disposal activity or exit activity, there has to be a present obligation. For example, आप decide कर रहे हो कि you are manufacturing a pen division and a duster division, and you decide to discontinue a duster division. Now, whatever employees which are there for the duster division, they are decided to be compensated by 9 months of salary. So now there is a present obligation. Yes, because you are disposing of the duster division, the employees will be paid a 9 month of salary. So there is a present obligation. Yes. Past event. Yes, you have decided to discontinue the operation. That is the event. Settlement of this is require a present economic outflow, which is a cash or other asset. So in order to settle down the 9 months of salary, you have to incur the cash outflow. So now, yes, all three conditions are met. So if there is an exit activity, the liability cannot be straight away recognized. Along with the exit activity, you must have a three conditions satisfied. So for example, if you terminate the employee, then yes, you need to recognize a liability once the three conditions are fulfilled. Let's take second example. The duster division was on a leased factory. Now, leased factory has a 10 years of, let's say, lock-in period, but you are breaching the lock-in period. And because of the breach, you have to pay a $1 million of penalty. Now, let's see, assess the three conditions. Is there a present obligation? Yes, to pay the penalty. As a result of past event? Yes, the past event is a disposal of the division, settlement of which requires the future economic outflow. Yes, you have to pay the cash. Three conditions are again met. So yes, you have to recognize a termination liability for the lease. So just you are deciding a fact that a segment is getting disposed of is not sufficient to record the liability. In order a item become a liability in the balance sheet, you have a three conditions which are bare minimum to satisfy. Again, number one, there is a present obligation. Number two, a present obligation has to because of the past event. Number three, settlement of which requires a future economic outflow. क्लियर है विद द डेफिनेशन ऑफ द लायबिलिटी. यहाँ पर जस्ट उन्होंने एक एग्जांपल सेट करने का ट्राई किया है विद डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन टॉपिक. The third one is another one, or it's not important? It's an example, so I think you No, can go no, through that. no, for the criteria for liability recognition. The entity has little or no discretion to avoid. So this is not official definition point. This is an interpretation they have given, that entity has little or no discretion to avoid a future transfer of the asset or providing the services. It means you don't have a choice whether to pay this liability or not, and that is why it's a liability. You have to settle it either by paying the cash or by transferring your assets. So this is not official part of your liability definition, but this is an interpretation that entity has no choice, but they have to settle down this liability. Okay. ठीक है. Now I'm skipping this particular part because it is right now not important. हमें एक बड़ा concept close करना है in next 15 minutes. Then we will come back on this disclosure part, which is the part of the ARO. Now ARO सबसे पहले क्या होता है and why our schedule will come into a picture. सो एआरओ का मतलब होता है एसेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन. फॉर एग्जांपल, आपने एक लैंड को लीज पे लिया फॉर 10 years एंड यू हैव मेड अ बिल्डिंग ऑन इट. यू हैव कैपिटलाइज द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, जो हमने लास्ट चैप्टर में देखा, पीपीएनडी. ऑल द कॉस्ट विच आर required to bring the asset into its ready to use condition, they are capitalized. Now आपका कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि at the end of the 10th year you have to return the land as is. That means you have to demolish the building, and this is called asset retirement obligation. So if entity has an obligation to dispose of the asset,
and to bring back the asset into its original condition, it is called asset retirement obligation. An entity has to record a liability today for ARO. Now let's check why you have to record the liability. Let's not look at the book right now. हमारी definition को assess करते हैं. Is there a present obligation? Yes, you have a present obligation that at the end of the 10th year, you have to demolish the building. Number two, as a result of past event. Yes, the past event is you have constructed a building which needs to be demolished. Number three, settlement of this liability will require a cash outflow or other economic outflow. Yes, when you demolish the building, you will need to call the people, you need to demolish the building, you need to clean the land. So in order to retire this asset, you have to repay, you have to pay the certain economic outflow. So three conditions are met. It means the liability which I have to demolish the asset and making the expenses is my present obligation because of the past event for which future economic outflow is required. So it is an liability for me. Now, how do you record the asset retirement obligation? So asset retirement obligations are recorded on a present value today. And then you prepare the amortization schedule and then you unwind the interest. So let's look at the example not given in your book, लेकिन एक example build करने का try करते हैं. And then let's come back with all this journal entry. So for example, hypothetically, let's say you have taken a construction of the building. So the construction cost for your building is, let's say, $100,000. Now this building needs to be demolished at the end of the 10th year. So your useful life for this asset is, let's say, 10 years. Now cost to demolish at the end of the 10th year, let's say it's $25,000, and you have a present value interest factor given in the question is 10%. Now what is the meaning of this? The building जो आपने बनाया है, at the end of the 10th year, you have to pay $25,000 from your pocket to get it demolished. It means this 25,000 will be paid at the end of the 10th year and not today. So in order to create a liability today, you have to bring it to its present value. So how to calculate? So let's prepare a one present value schedule. So you have a year 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Your present value factors are 10%. So 1 divided by 1.1, 1.1. So 0.39 is a factor. So 25,000 after 10 years are 9638.58 today. So this is a present value of 25,000 after 10 years at 10% interest is 9638.58 today. So what are your journal entries for this? So हमने FAR 3 में देखा था when we did a PPND. So you have a PPND account debited, which is your building account debited. Let's say it's 100,000 to cash account credited 1,00,000. Now Uh, this is also, हाँ जी बोलो. why would the PPE building not be debited for 125,000? आते हैं उस पे, होल्ड करो ना. जो हमने किया फार 3 में, डिड वी डिड डिमोलिशन कॉस्ट का अकाउंटिंग. Yes, it's included in the capitalization. हमने किया हमारे कॉन्सेप्ट्स पे डिमोलिशन का अकाउंटिंग. अभी हम कर रहे हैं ना. सो आई एम कमिंग देयर. मैंने गैप भी छोड़ा है. सो आराम से कर रहे हैं ना. Yeah. फर्स्ट एंट्री इज व्हाट? पीपीएनडी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 1 लाख. नाउ आज आपकी पॉकेट से 1 लाख गया है. सो यू हैव क्रेडिटेड 1 लाख. नाउ you have another expenses which are a part of your PPND, because without demolition the contract will be not enforceable and it will be a breach of the contract. तो आपको asset को जब आप वापस करोगे, a land when you are going to return to the lessor, you have to make sure that building is demolished. So cost of demolishing is a part of your PPND too, because it is required to make sure that 10 years के लिए आप asset को properly use कर पाओ. You are not a breach of any legal provision. So your second entry is going to be same. PPND building will be still capitalized with a present value of your future outflow.
Now this amount is a liability today because this expense is not due for a cash payment today. So you say asset retirement obligation liability account credited by this value. So your entry basically says that building account debited 1,09,638 to cash 1 lakh which you paid today, to asset retirement obligation liability account credited 9638.58. फर्स्ट एंट्री क्लियर है हाउ यू रिकॉर्ड द इनिशियल रिकॉग्निशन. Yes. चलिए अब हमें बनाना पड़ेगा अमोर्टाइजेशन शेड्यूल दैट हाउ योर वैल्यू will overcome. So you have a something called beginning balance, and you have something called interest. Is there any principal? If no, and then you have a ending balance. You have the same periods here, so I'll take the same period. Your beginning balance is 9638.58. You start charging a 10% interest on this. You have no principal repayments right now. आप सारा payment करने वाले हो at the end of the 10th year. Now, this is the case not of your loan repayment. This is the case where your present value is becoming a future value. So your ending balance will be beginning balance plus interest minus ending balance. This ending balance becomes your beginning balance of the second year, and you are going to do a same copy paste accounting for all the next 10 year. So if you see, we have unwind this component. So 9,638 today has become a 25,000 at the end of the 10th year. So this is the accounting which we have to do, which called a unwinding of interest every year. So year on year हम लोग क्या entry pass करेंगे? So you have year 1, year 2, year 3 and so on. We are going to pass an entry which is called accretion expense account debited or unwinding expense account debited to ARO liability. So for the first year, your entry is going to be 963, 963. Second year, your entry will be 1060, 1060. Third year, your entry will be 1167, 1167. What will happen eventually that you have a beginning balance of 9638, you will keep adding the interest component year on year, and this interest component will make sure that the value in your liability account becomes a $25,000 at the end of the year 10. So this expense are recorded in the income statement. This goes to your income statement as an expense, and this goes as a liability in your balance sheet. So ultimately at the end of the 10th year, you have a ARO balance of 25,000. Now let's say 10 years are done and you want to demolish the building. Your entry is ARO liability account debited to cash account credited, which is 25,000. And you will continue to charge a normal depreciation entry. So depreciation account debited to accumulated depreciation. Now your total value of your asset is 1 lakh plus 9638 divided by 10. So every year you are still going to charge 1096 as the depreciation expense. So this is how technically your entire ARO accounting is going to work. So अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि there is an entity which has a retirement disposal obligation, तो आपको पहले उसका present value निकालना पड़ेगा. Then you have to capitalize the present value. फिर आपको amortization schedule बनाना पड़ेगा. Year on year you will charge the accretion expense and you will unwind the liability. At the end of the 10th year आप liability को repay करोगे, and every year you will keep on charging the depreciation expense as well. Clear है ये example? Oh, why is the interest multiplied with the amortization balance? So this is a concept of your time value of money. So आपको अगर $25,000 चाहिए आफ्टर 10 years, आज आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? सो दिस इज नॉट मल्टीप्लाइड, दिस इज अ वर्किंग. ये मतलब हमने कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज नहीं किया है, ये हमने शेड्यूल बनाया है कि अगर मुझे 10 years के बाद $25,000 किसी को रीपे करना है तो आज मेरे पास कितना पैसा हाथ पे होना चाहिए. नाउ दिस मनी विल ग्रो एट अ 10% टू अ $25,000. सो दैट इज वाई आप अगर आप जैसे ही प्रेजेंट वैल्यू के टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट आप एक बार रिवाइज करोगे, यू विल गेट टू नो दैट व्हाई वी हैव डन दिस. So technically this is the value by which your liability keeps on increasing every year in such a way that at the end of the 10th year
योर लायबिलिटी बिकम्स $25,000. We are going to pay this interest ourselves, or we would invest and then get the interest from someone. इंटरेस्ट छोड़ दो, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, इट्स एक्स 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 एक्स. अगेन दिस इज नॉट अ इंटरेस्ट. हमने एंट्री क्या की है, एक्रीशन एक्सपेंस डेबिटेड और अनवाइंडिंग एक्सपेंस डेबिटेड. सो दिस इज द एक्सपेंस, दिस इज नॉट पेड टू एनीवन. एंट्री क्या है, एक्रीशन एक्सपेंस डेबिटेड टू एआरओ, लायबिलिटी क्रेडिटेड. हम बेसिकली 9638 जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है उसको धीरे धीरे फ्यूचर वैल्यू की तरफ लेकर जा रहे हैं इन सच अ वे कि एआरओ का वैल्यूएशन 25,000 हो जाए एट द एंड ऑफ द 10th ईयर. सो एक्रीशन एक्सपेंस किसी को आप आज पे नहीं कर रहे हो, this becomes the part of your ARO liability. Eventually at the end of the 10th year आप आपकी ARO की liability कैश में सेटल डाउन करोगे. Mm. ठीक है, Okay. चलिए बढ़िया है. सो नाउ वी विल कॉल इट अ डे, लेकिन आपके लिए मैं एक होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ. देन वी विल डू कंटिजेंसी नाउ इन द नेक्स्ट सेशन. एआरओ का आप एक बार थियरी देख लेना, वॉट एवर वी हैव डन प्रैक्टिकल नहीं दिया है, सो यू कैन रेफर द माई शीट. लेकिन आप इसका थियरी पढ़ोगे, दिस इज द एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन. सो एसेट आप कैपिटलाइज करोगे, एआरओ को आप क्रेडिट करोगे. एवरी ईयर यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड अ एक्रीशन एक्सपेंसेस. एवरी ईयर यू विल कंटिन्यू टू रिकॉर्ड अ डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस. एंड ठीक है, इसमें अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो हम लोग एक बार देख लेंगे. प्लस हमारी प्रीवियस सेशन की भी एक थियरी पेंडिंग है जो हमने नहीं की है, विच इज डिस्क्लोजर. इट इज सेम जो हमने डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में किया था. सो अब दोनों पेजेस का एक बार थियरी रेफर कर लेना, कुछ भी क्वेश्चन है तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे. नेक्स्ट सेशन हम कंटिजेंसीज कवर करेंगे, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी इजी टॉपिक, मे बी 20-25 मिनट्स में कवर हो जाएगा. उसके बाद रियल खेल शुरू होने वाला है बॉन्ड्स एंड लीज का. सो बिफोर दैट प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट्स आप देख कर आना, क्योंकि अगर आप वहां पर नहीं देखोगे देन यू विल बी लाइक कंफ्यूज्ड कि कैसे मैथमेटिक्स चल रही है, आप नहीं समझ पाओगे चीजों को. ठीक है, Okay. चलिए. सो आई विल सी यू. एग्जाम के लिए क्या रखना है, आई विल लेट यू नो ओवर व्हाट्सएप. Mm. ओके.